Hello aspirants, welcome to Nirmal Vidya UPSC. Today we are going to learn Man Takes to City Life, Ancient Indian History for UPSC CSE prelims as well as mains. Hi, I am Kshama. So let's start with the lecture. This is our Civil Service Exam Foundation course presented by Nirmal Vidya. Here is a disclaimer. This channel is an independent educational initiative created to assess aspirants of the UPSC Civil Services Examination. The content presented here is for academic purposes only and is not affiliated with any government body, coaching institute, organization, or religious community. All rights are reserved by the creator of this channel. Unauthorized copying, reproduction, or distribution of the material is strictly prohibited. References, images, and external resources used remain the intellectual property of their respective owners and are shared here under fair use for education. Any revenue generated from this channel is solely intended to sustain and support the continuation of educational work. Viewers are encouraged to cross-check information from standard reference books and official UPSC sources. So let's start with Man Takes to City Life. This is part A, the cities of class 6, chapter 2 of our Ancient Indian History by ROMILA THAPAR. And this is our lecture number 3. This chapter is important for prelims as well as mains perspective. Each year, almost one question is asked on Harappa culture or urban settlements or drainage system. So this topic is very important. In the end of the lecture, we will also discuss the questions asked in mains. Words of wisdom. Those who cannot remember the past are condemned to repeat it, said by George Santayana. सो जॉर्ज संतायना ने क्या बोला है कि जो भी लोग अपने अतीत को याद नहीं रखते वो उसे दोहराते रहते हैं। तो इसका ये अर्थ हुआ है कि हमें अपने पास्ट की गलतियों से सीखकर उसे आगे आने वाले फ्यूचर में अच्छे से उसके लेसन्स हम और या एक्सपीरियंस हो गए हमारे, वो उस अकॉर्डिंगली हमें एक्शन में लाना चाहिए, ना कि वही गलतियां हम बार बार दोहराते रहें। ये कोट्स आपके एसेज में काम आएंगे, कहीं भी आंसर राइटिंग्स में काम आएंगे, सो टेक नोट ऑफ दिस ऑल्सो। Introduction: The Great Shift. From small nomadic groups of hunter-gatherers to the bustling complex societies of the first cities, this chapter explores one of the most important transformations in the human history. हमें पता है कि primitive people small nomadic groups में hunter-gatherers के जैसे रहते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, विलेजेस फॉर्म हुए जब एग्रीकल्चर आ गया और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज का फर्स्ट सिटी फॉर्म हुआ। तो ये चैप्टर डील करता है हमारे इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस जो हमारे पास्ट में हुए थे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। Over the years, some of the smaller villages grew into larger ones. The number of people living in them increased. तो क्या हुआ, जो छोटे छोटे विलेजेस है वो लार्जर वंस में कन्वर्ट हो गए और पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो गया। न्यू नीड्स अरोज एंड न्यू ऑक्यूपेशन वर स्टार्टेड। नए नए ऑक्यूपेशन स्टार्ट हुए। जैसे ही इच्छाएं या उनकी डिजायर्स नीड्स बढ़ने लगी तो नए नए ऑक्यूपेशन भी स्टार्ट हो गए। People in this large village were prosperous because they were now producing more food than they required for their needs. So they could exchange this surplus food for other things such as clothes, pottery or ornaments. तो देखो ऑक्यूपेशंस क्या क्या हो गए, क्लोथ बनने लगे, पॉटरीज बनने लगे, ऑर्नामेंट्स बनने लगे। तो जो भी सरप्लस अमाउंट में फूड जनरेट हो रहा था तो वो एक्सचेंज कर रहे थे in barter system में. Now it was no longer necessary for every family to work in the fields and produce its own food.
अब ये ज़रूरी नहीं रह गया कि सभी फैमिलीज खेती में ही अपना समय व्यतीत करें और अपना खुद का खाना बनाए। वो क्या करने, अभी जब सरप्लस अमाउंट में हमको फूड अवेलेबल था तो वो अदर ऑक्यूपेशंस की तरफ मुड़ने लगे। दोस हु वेर वीवर्स, पॉटर्स और कारपेंटर्स एक्सचेंज द आर्टिकल्स which they produce for food grown by other families. Gradually, as trade increased, the craftsmen began to live together and such villages grew into towns. तो कैसे क्या हुआ, ऑक्यूपेशन चेंज होने की वजह से ट्रेड भी इंक्रीज हो गया, क्राफ्ट्समैन जो थे वो साथ में रहने लगे और जो विलेज था वो टाउन में कन्वर्ट हो गया. Now the relevance of this chapter. Why this chapter matters? Because this helps us understand how the human society evolved from villages to more complex urban settlements and help us trace the origins of civilization in India. तो अब ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज हमें ये चैप्टर से पता चलता है कि ह्यूमन सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई थी. जैसे अभी हमने सीखा कि स्मॉल विलेजेस से सिटीज या टाउन्स में कन्वर्ट, टाउन से सिटीज में कन्वर्ट कैसे हुआ. ओके, तो एक इवोल्यूशन आ गया था सेटलमेंट्स में, फ्रॉम विलेजेस टू मोर कॉम्प्लेक्स अर्बन सेटलमेंट्स, एंड ये एक सिविलाइजेशन के तरफ मुड़ गया. सो ऑल दिस ट्रांसफॉर्मेशंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये हमें पूरी तौर पे जानकारी प्रोवाइड करता है ये चैप्टर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. Relevance for UPSC General Studies: urbanization, settlement patterns, archaeology, planning and civic life, long-term themes in Indian history. So that's why this chapter is very important. Now, life before cities, the Old Stone Age. Hunter gatherers, hunter gatherers कौन थे? For most of the human history, people lived in the Old Stone Age, Paleolithic. अब लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा है कि 3 लाख ईयर्स लग गए उन्हें एक सेटलमेंट में आने के लिए. तो ओल्ड स्टोन एज बहुत ही पुराना एज है हमारा. दे लिव इन स्मॉल नोमैडिक ग्रुप्स, लाइफ डिपेंडेंट ऑन हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग वाइल्ड प्लांट्स, फ्रूट्स एंड नट्स. तो इनका पूरा जो जीवन है वो एनिमल्स को मारने, पकड़ने में और गैदरिंग वाइल्ड प्लांट्स, फ्रूट्स एंड नट्स फॉर देयर फूड, इनमें ही बीत गया. देयर वर नो परमानेंट होम्स, ओनली टेम्पररी कैंप्स एंड रॉक शेल्टर्स. तो वो सिर्फ गुफाओं में रहते थे, छोटे छोटे कैंप्स में रहते थे और यहाँ से वहाँ वॉन्डर करते थे इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. सो यहाँ पे बहुत टाइम उनका बीत गया यही चीजों में. धीरे धीरे क्या हुआ, ये नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. द फर्स्ट रिवॉल्यूशन केम इन टू बीइंग, दैट इज द न्यू स्टोन एज. अब फार्मिंग और डोमेस्टिकेशन आ गया. The new stone age Neolithic began when people learned to farm. अब Neolithic age कहाँ से start हुआ? जब agriculture आ गया. People learned to do farming. So they started growing crops like wheat and barley. They also domesticated animals, example goat, sheep, cattle, for a steady supply of food and milk. This allowed people to settle in one place and build the first permanent villages. अब क्या हो गया, जब farming came into existence और every resources and needs were fulfilled for the people, they started living at one place as permanent settlement, or the first permanent village came into existence.
So now the cradles of civilization. Why river valleys? सारे के सारे civilization river valleys के पास ही क्यों है? The first great civilization all emerged in river valleys because there were three important factors: fertile soil, water supply, and transportation. Fertile soil, rivers flooded annually, depositing rich silt alluvium perfect for farming. तो रिवर वैलीज के पास हमारा जो सॉइल है वो बहुत ही फर्टाइल था। रिवर्स एनुअली फ्लडेड पानी से भरे हुए रहते थे, तो वहां पे रिच सिल्ट डिपॉजिट होते रहता था, दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर फार्मिंग। तो वाटर सप्लाई 12 महीने रहते थे, तो अ रिलेबल सोर्स ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेटिंग क्रॉप्स वॉज अवेलेबल। अब ट्रांसपोर्टेशन जो था, रिवर एक्ट एज नेचुरल हाईवेज मेकिंग ट्रेड एंड कम्युनिकेशन ईजियर। तो जो भी सरप्लस फूड था वो ट्रेड होता था, तो transportation was easy near the river valleys. So all these factors led to the emergence of great civilizations near the river valleys. And we can see this four civilizations were near the river valleys. The Nile River, it was the Egypt civilization. Near Tigris and it was the Iraq or Mesopotamia. Indus River, present day Pakistan, and Hong Ho, China. So see, this is the Egypt civilization. Here it is the Iraq. Here India and Pakistan. And here is the China. So all this civilization were emerged in the river valleys. Now what is a city in the ancient context? A settlement characterized by large population, plant layout, division of labor, specialized crafts, trade, administrative functions. All this led to the formation of a city, or we can say it is a city. When we have large population, जब जनगणना बहुत ज़्यादा हो, पॉपुलेशन ज़्यादा हो और एक प्रॉपर प्लान लेआउट हो, सिटी का डिविजन ऑफ लेबर प्रॉपरली हो, स्पेशलाइज क्राफ्ट्समैन हो, ट्रेड प्रॉपर हो रहा हो और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, जहाँ पे ये सारे फैक्टर्स हैं, तो ऐसे जगह को हम एक सिटी का नाम देते हैं। अब ये डिफरेंट कैसी है विलेज या टाउन से? बिकॉज सिटीज आर मोर कॉम्प्लेक्स, it is more complexity, services, infrastructure, state involvement. So all these factors led to the difference of city from village and town. Why move to city now? Opportunities for trade, crafts, social organization, administrative control. अब विलेज से सिटी क्यों मूव होते हैं पीपल? बिकॉज वी हैव मोर अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेड, क्राफ्ट्स एंड ऑक्यूपेशन। हमारा अदर वैरायटी मिलती है हमको, कुछ तरक्की करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास। सोशल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो रहा है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, रूल्स एंड रेगुलेशन से एक प्रॉपर समाज बन रहा है। तो इसलिए विलेजर्स जो होते हैं वो सिटी की तरफ मूव करते हैं इन सर्च ऑफ jobs and other necessary. Now, what is a civilization? A civilization is a complex human society with characteristics like urban development, advanced technology and organized government. अब क्या हो रहा है? सिविलाइजेशन क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सोसाइटी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स समाज है, जहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट है, एडवांस टेक्नोलॉजी पाई जाती है और एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। कोई भी सिटी या प्लेस को लेके जब गवर्नमेंट सही है, वहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है और नई नई तकनीक आ रही है, तो ऐसे
समाज को हम क्या बोलेंगे? एक civilization. It involves culture and social structures such as social stratification, a symbolic system of communication like a writing system, and a shared culture identity. तो इसमें और क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है? जो एक प्रॉपर कल्चर हो रहा है, सोशल स्ट्रक्चर्स है, एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में सिस्टम है, और सिंबॉलिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, लिखाई पढ़ाई हो रही है, प्रॉपर राइटिंग सिस्टम हमें जहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसे सारे शेयर्ड कल्चर को हम क्या बोलेंगे? एक सिविलाइजेशन का नाम देंगे। अदर कॉमन ट्रेड्स इंक्लूड अ सरप्लस ऑफ फूड प्रोडक्शन, सरप्लस अमाउंट में फूड प्रोड्यूस हो रहा है थ्रू एग्रीकल्चर, डिविजन ऑफ लेबर है, जहाँ पे ऑक्यूपेशंस, अलग अलग ऑक्यूपेशंस मिल रहे हैं हमको अदर देन एग्रीकल्चर, मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर्स है, एंड सिस्टम ऑफ लॉ एंड ट्रेड, प्रॉपर सिस्टम ऑफ लॉ एंड ट्रेड जहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो ऐसे समाज को हम क्या बोलेंगे? एक civilization. So the society which is more complex in the human perspective is called as the civilization. अब हमारे पास examples है how many civilizations were there, like Mesopotamia civilization, Iraq. This was near the river valley, Tigris and Euphrates region. Egyptian civilization, Indus Valley civilization, India and Pakistan. We call it as Harappan culture. Chinese civilization, Yellow River Valley, Minoan civilization, Crete near Mediterranean, and Mayan civilization in Central America. So these six were the civilizations. Now, case study in Mesopotamia, the land between rivers. Mesopotamia was the land between Tigris and Euphrates River, which we call it as modern day Iraq. So, जो Mesopotamia, it is the earliest civilization. Okay. Home to the Sumerians, who built the first cities like Ur and Uruk, invented the wheel, the plow, and the first system of writing called as cuneiform, built massive temples called ziggurat. Ziggurat means to rise high. So, क्या हुआ? Mesopotamia was the home to Sumerians, who built the first cities like this was the first cities Ur and Uruk, invented wheel, the plow, and the first system of writing called as cuneiform. See in the image, built massive temples called ziggurat. Now, the Egypt. The gift of Nile. Civilization grew along the Nile River in North Africa. The Egypt civilization ये नाइल रिवर में ग्रो हुआ था in North Africa. The Nile's predictable floods made the land extremely fertile. So जो रिवर नाइल फुली फ्लडेड थी, तो वो जो सॉइल है बहुत ही फर्टाइल था, which was beneficial for the crops, ruled by god kings called pharaoh. तो सिटी जो सिविलाइजेशन था, it was ruled by the god kings called pharaoh. तो pharaoh बोलते थे उनको, and the pharaoh was the supreme ruler of ancient Egypt, serving as both the head of state and the chief religious leader. And they built the monumental pyramids of Giza as tombs for their pharaoh. तो वो उनके किंग के लिए पिरामिड ऑफ गिजा उन्होंने बिल्ड किया था. Developed a picture based writing system called hieroglyphic. Hieroglyphic is a system of pictorial writing that uses picture symbols. Okay. So this is the gift of Nile.
उनके किंग्स को फेराव बोलते थे। पिरामिड ऑफ गिजा उनके लिए बनाया गया था और उनने एक राइटिंग सिस्टम शुरू किया था, हीरोग्लिफिक। Earliest urban settlements in India. Now the Indus Valley. The proto-urban and urban settlements emerged in the Indus Valley region. Example Harappa and Mohenjo-daro. This shows plant streets, drainage, large buildings, granaries. See, this is the archaeological ruins of the place city of Mohenjo-daro. It was around 3300 BCE before Common Era onwards for mature Harappan phase. Archaeological evidences is crucial. That is, we have ruins, bricks, urban layout of the Mohenjo-daro. Now, it was the earliest city to be discovered in India on the river Indus in Sindh. Further up the Indus Valley, another ancient city was excavated, and this was Harappa near modern Montgomery. तो मोहनजोदारो जो थे वो सबसे पहली सिटी थी इंडिया में जो डिस्कवर की गई थी, और उसके बाद हरप्पा नियर मोंटगोमेरी. अब archaeologists call the civilization of these ancient cities the Indus Valley civilization because both these cities and the other sites sharing the same culture were found in the Indus Valley. तो अब आर्कियोलॉजिस्ट इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए बोलते थे क्योंकि जो आसपास के जो साइट्स थे वो भी सेम कल्चर में फाउंड किए गए थे, तो इसीलिए उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला गया है आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा. But for the last 20 years, archaeologists have been digging in the other parts of northern and western India and have found more cities which resemble those of the Indus Valley. So अभी भी जब archaeologists पिछले 20 साल से जब फाइंड कर रहे हैं तो अभी भी उनको आसपास की जगह में भी सेम कल्चर मिला है. तो therefore the Indus Valley civilization is now called the Harappa culture since the pattern of living in this resembles that of the Harappa. तो दोनों के पैटर्न ऑफ लिविंग एक होने से अभी उसको हरप्पा कल्चर भी बोला जाता है. वन ऑफ द सिटीज was found at Rupar near Chandigarh, another at Nothal near Ahmedabad, and third at Kalibangan in Rajasthan. अभी हम आगे देखेंगे. The Harappa culture. The Harappan culture was spread over the whole of Sindh. देखो यहाँ पे पूरा का पूरा हरप्पा कल्चर, दिस मैप रिप्रेजेंट द हरप्पा कल्चर. तो पूरा का पूरा इंडस वैली रिवर, इंडस वैली के अराउंड मिलता है. सी दिस इज द इंडस रिवर फ्लोइंग फ्रॉम हियर इनटू द अरेबियन सी. So the Harappa culture was spread over the whole of Sindh, Balochistan, almost the whole of Punjab, that is the east and the west, west and the east, northern Rajasthan, and Kathiawar in the Gujarat. If you locate these areas on map, you will see how large the geographical extent of the sea, how large the geographical extent of the culture was. It was called a civilization because people were living a more advanced life than those of the previous primitive stage. तो इसीलिए उसको civilization बोला गया है क्योंकि more advanced life यहाँ के लोग जी रहे थे than the primitive stage. Also, the Harappa people knew how to write and their language was written in picture-like signs called pictograph. Unfortunately, historians have not yet been able to read and understand this pictograph. तो उनके एक रिटन फॉर्म पिक्चर लाइक साइंस थे जिसको पिक्टोग्राफ बोला गया था. उनकी एक खुद की राइटिंग सिस्टम थी. हरप्पा कल्चर grew and developed in India at the same time as other civilizations in other parts of Asia and Africa, mainly in the valley of the rivers
नाइल, यूफ्रेट्स, टिग्रिस एंड होंगो। जहाँ पे हमारा इंडिया में हड़प्पा कल्चर डेवलप हो रहा था, अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज में दूसरे सिविलाइजेशन ग्रीव हो रहे थे, जो हमने केस स्टडीज में देखे। और हड़प्पा culture became important about 4,500 years ago, or we can say normally as 2,500 before Christ. In in this area, in the northern and western parts of India, including what is now Pakistan, were covered with forest. This whole region was covered with forest. The climate was moist and humid, and Sindh and Rajasthan were not desert as they were today. तो राजस्थान और सिंध के जो एरिया थे वो डेजर्ट नहीं थे, वो पूरा फॉरेस्ट से भरा हुआ था वो टाइम पे। तो फॉरेस्ट में अलग अलग प्राणी पाए जाते थे, जो सच एज टाइगर, एलिफेंट्स, राइनोसेरस एंड हिपोपोटामस। और फॉरेस्ट प्रोवाइड करता था टिम्बर, जो कि यूज होते थे ब्रिक्स बनाने में और फॉर बिल्डिंग द सिटीज। टिम्बर बोट्स बनाने में भी काम आता था। नाउ प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। Harappan city planning. Grid layouts of streets, houses built of baked bricks. तो houses were built of baked bricks. पक्के ईंटों से बनाया गया था houses. Drainage system, properly drainage system था, wells थे, baths थे. Example, the Great Bath at Mohenjo-daro showing advanced brickwork and planning. देखो कितने प्रॉपरली एक सिस्टमैटिक वे में उनके घर या ड्रेनेज सिस्टम बना गया था। ये ग्रेट बात है। तो ये सारे जो ईंट थे वो बेक्ड ब्रिक्स थे। डिफरेंट जोन्स, सिटाडल एंड लोअर टाउन। सिग्निफिकेंस shows advanced civic planning, public health management. So the Harappan city was very well planned. The cities of Mohenjo-daro and Harappa were divided into two parts. That is, the upper part built on raised grounds has been described as the citadel. जो ऊपर में बनाया गया था उसको बोलते हैं हम citadel. This part included the public buildings, the granaries, the more important factories and the religious building. So citadel में हमें बहुत important जो buildings थे वो पाए जाते हैं. The other part of the cities which was much larger was the lower part. तो उनको लोअर टाउन बोलते थे, where the people lived and carried on their professional work. If the city was attacked or threatened by floods, the inhabitants of the lower city probably found refuge in the citadel. तो अगर कुछ थ्रेट हो जाता था या फ्लड आ जाता था लोअर पार्ट में, तो जो भी inhabitants है वो refuge citadel में ले लेते थे. In the citadel at Harappa, the most impressive buildings were the granaries. तो granaries were the most impressive buildings citadel में. They were neatly laid out in rectangles and lay close to the river. The grains was brought in boats along the rivers and stored in granaries. तो along the rivers जो भी grains थे वो लाते थे और granaries में store करते थे. तो यहाँ पे this was the best way of transporting grains. As it was the cheapest and most efficient way because उसमें लेबर कम लगता था. The granaries were important because the life of the city dwellers depended on the granaries being full. तो इसलिए granaries important थे. जो भी वहाँ पे लोग रहते थे उनका पूरा का पूरा लाइफ डिपेंड करता था उनके granaries में जो अनाज था उनसे ही. Up near the granaries were the furnaces where the metal workers produce a variety of objects in metal such as copper, bronze, lead and tin. Granaries के पास में ही metal workers का काम होता था. The potters also worked in this part and the laborers all lived together near the factories in small quarters. तो ये सारे के सारे जो division of labors यहाँ पे बोला गया है
ये एक स्मॉल क्वार्टर्स में आसपास में ही रहते थे। तो जो सिटाडल था एट मोहनजोदारो, इट वाज प्रोटेक्टेड बाय अ रैम्पार्ट एंड हैड this and other buildings as well. There is a large building which appears to have been a palace of or the house of a governor. तो सिटाडल में एक बिल्डिंग ऐसी थी जिसको बोला जाता था या तो पैलेस या हाउस ऑफ द गवर्नर। अब हमें ये नहीं पता कि वहां पे हड़प्पा पीपल का एक किंग होता था या कम्युनिटी एक रूलर के द्वारा रूल की जाती थी, लेकिन जहां तक हमें पता है कि वहां पे एक पैलेस जैसा एक बिल्डिंग है, तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। अनदर बिल्डिंग नियर बाय वॉज आइदर अ मीटिंग हॉल और अ मार्केट प्लेस। द बेस्ट नोन ऑफ द बिल्डिंग्स इन मोहनजोदारो citadel is the great bath has shown in the image। तो हमें ग्रेट बाथ एक बहुत ही बेहतरीन बिल्डिंग मिली है जो कि मोहनजोदारो के टाइम से है। दिस रिजेंबल्स अ लार्ज स्विमिंग पूल बट इस पर्पस इज नॉट नॉट टू अस। अब ये तो लगता है कि लार्ज स्विमिंग पूल हो सकता है, लेकिन अभी तक इसका पर्पस हमें नहीं पता। अब जो हाउसेस हैं वो कैसे हैं? द लोअर सिटी ऑफ मोहनजोदारो वाज केयरफुली प्लान्ड बिफोर द हाउसेस वर बिल्ट। द स्ट्रीट्स ran straight and right angles to each other। सो जो प्लानिंग है सिटी की वो बहुत ही प्रॉपरली की गई है, हाउसेस भी बहुत ही प्रॉपरली बिल्ड किए गए हैं। तो जो स्ट्रीट्स हैं वो राइट एंगल्स पे होते थे। स्ट्रीट्स बहुत ही वाइड है। मेन स्ट्रीट कितना 10 मीटर्स के वाइड रेंज पे था, जो कि आज बहुत बड़ी बड़ी सिटीज में होता है। द हाउसेज बिल्ट ऑन बोथ साइड, स्ट्रीट के दोनों साइड में हाउसेज बिल्ट थे। और हाउसेज किससे बिल्ट थे? ब्रिक्स से, जो बेक ब्रिक्स है। स्ट्रॉन्ग वॉल्स थे उनके, और प्लास्टर विथ प्रॉपरली प्लास्टर थे और कलरफुल थे। और उनके रूफ्स क्या थे? फ्लैट थे बिल्कुल। उनके विंडोज होते थे जहां, और बहुत सारे अंदर में डोर्स होते थे जो कि वुड से बने हुए होते थे। तो दिस इज अबाउट द प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द हरप्पन सिटी। अब उनका किचन जो होता था, वहां पे एक फायर प्लस प्लेस होता था। लार्ज जार्स ऑफ पॉटरी फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स और ऑयल। उसी के पास में एक ड्रेन होता था। प्रॉपर बाथरूम्स होते थे वहां पे जो कि कनेक्ट है ड्रेन से डायरेक्टली। तो जो भी स्ट्रीट्स के अलोंग में ड्रेन्स होती थी, वो प्रॉपर एक ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू क्लीन भी रखा जाता था। और जो ड्रेन्स थे वो स्लैब ऑफ स्टोन से कवर किए जाते थे। तो दिस वाज अबाउट ऑल द प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि वो टाइम पे पाए जाते हैं जबकि इतना एंशियंट सिविलाइजेशन था। कितना ही तो हम सोच सकते हैं कितनी ही प्रॉपर प्लानिंग की गई थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो कि हम आज के दौर में पाया जाता है। So this is about the planning and infrastructure of the Harappan city. Now the economic functions, trade and craft, a surplus economy. Craftspeople, they used to make bead, pottery, metallurgy, seal making. Trade was there. The raw materials from distant places, example Rajasthan, Oman, indicate long distance exchange। तो जो भी ट्रेड होता था ये अदर सिविलाइजेशन से होता था, तो हमारा जो भी रॉ मटेरियल है वो बाहर से आता था या यहाँ से बाहर जाता था। ट्रेड सिस्टम बहुत ही ग्रो हुआ। एग्रीकल्चर इंटरलैंड सपोर्ट, cities dependent on surrounds for food, surplus production enable non-farm occupation। अब जब पहले क्या होता था, विलेजेस में सिर्फ एग्रीकल्चर ही कर रहे थे, लेकिन जैसे सिटीज में आ गए वो और सिविलाइजेशन फॉर्म हुआ तो नए नए ऑक्यूपेशंस आने लग गए। तो नॉन फार्मिंग ऑक्यूपेशंस एग्जिस्टेंस में आए। स्टोरेज एंड ग्रैनरीज, अब जब सरप्लस अमाउंट में फूड था हमारा तो वो रखने के लिए ग्रैनरीज बनाए गए। इंडिकेटिव ऑफ सरप्लस इकोनॉमी एंड प्लान मैनेजमेंट, तो प्रॉपर एक प्लानिंग मैनेजमेंट था हमारे एंशियंट टाइम्स में, जिससे हमें ये पता चलता है। एंड सी, दिस इज द पशुपतिनाथ सील। तो इससे हमें पता चलता है कि राइनोसेरस, एलिफेंट, टाइगर्स, अलग अलग जानवर हमें इस सील में
डेसिफर किया जाता है। तो इससे हमें समझ में आता है कि वो टाइम पे ये सारे एनिमल्स और उनका वर्शिप कैसे होता था। शायद वो पशुपतिनाथ को वर्शिप करते थे। सो वी कैन नो दैट एंशियंट पीपल यूज टू वर्शिप डेटीज। तो उनके रिलीजन के बारे में भी हमें पता चलता है फ्रॉम दिस सील। लाइफ इन द न्यू सिटीज, अब कैसा था लाइफ इन न्यू सिटीज? अब सिविलाइजेशन तो फॉर्म हो गया, इसमें कैसे था फिर? स्पेशलाइज्ड जॉब्स मिलने लगी, ट्रेड एंड इकोनॉमी ग्रोथ हुआ, सोशल क्लासेस की एक हायरार्की बन गई। तो specialized jobs with surplus food, not everyone had to be a farmer. People became specialized craftsmen, merchants, priests, soldiers, and government officials. So they took to various jobs or occupation. Of trade and economy, cities became hubs for trade. People exchanged grain, pottery, tools, and luxury goods with other cities and nomadic groups. तो यहाँ से ट्रेड और इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ। सोशल क्लासेस, सोसाइटी बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायरार्किकल। अ किंग और हाई प्रीस्ट वॉज एट द टॉप। तो देखो एक हायरार्की फॉर्म हो गई, जो भी राजा थे वो ऊपर थे, फिर नोबलमैन उनको फॉलो करने लगे, फिर मर्चेंट्स एंड क्राफ्टमैन एंड फार्मर्स वेर एट द बॉटम। सो in the new city, this all these factors led to the development of the urban settlement. सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट, अब इसका सोशल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या था? एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी फॉर्म हो गई थी। अर्बन सेंटर्स सजेस्ट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जैसे हमने अभी देखा किंग से नोबल पर्सन, मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन और फिर फार्मर्स। तो एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन फॉर्म हो गया। एलाइट हाउसेज एंड पब्लिक बिल्डिंग्स बन गई। पॉलिटिकल कंट्रोल आ गया, एक प्रॉपर गवर्नमेंट सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर्म हो गया। रूलर्स और एलाइट्स ऑर्गेनाइज वाटर सप्लाई, ड्रेनेज एंड सिटी प्लानिंग। तो जो पॉलिटिकल कंट्रोल है, इनके अंडर में क्या आ गया? वाटर प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वाटर सप्लाई था। ड्रेनेज और सिटी प्लानिंग इनके अंडर में आ गया। अब एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल था? मैनेजिंग ट्रेड, क्राफ्ट्स, पॉपुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। And why this is important? Because cities are center of culture, religion, administration, which will evolve into later kingdoms and empires. So ये जो civilization था, ये important इसलिए है क्योंकि it later on develop या evolve into kingdoms and empires. सो छोटे से स्मॉल विलेजेस से हमने ये देखा कि कैसे कैसे नोमैड पीपल विलेजर्स बने, उसके बाद एक टाउन या सिटी में कन्वर्ट हुए, एक प्रॉपर फिर सिविलाइजेशन में आ गए। और इसके बाद हम देखेंगे आगे कि किंगडम्स और एम्पायर्स का कैसे एग्जिस्टेंस हुआ। Now the conclusion: cities are one of the greatest human inventions. They bring people together, ideas, resources and crafts trade. तो cities क्या है? बहुत ही ग्रेट ह्यूमन इन्वेंशन है, जो सभी को एक साथ लेके आते हैं, जहाँ पे पीपल्स, आइडियाज, रिसोर्सेज, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड टुगेदर वर्क में आते हैं। अर्ली इंडियन सिटीज वेर पाइनियरिंग, well planned, connected, and complex. In understanding this, we understand not just the past but how the present urban life has roots in ancient times. तो हम जब ये चैप्टर पढ़ते हैं मैन टेक्स टू सिटी लाइफ, तो हमें इससे ये समझ में आता है कि पास्ट में कैसे डेवलपमेंट हुआ था, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आए थे, जो कि आज जो प्रेजेंट अर्बन लाइफ हमारा है, तो इसके रूट्स हमें एंशिएंट टाइम्स में ही कैसे मिले थे, ये इस चैप्टर से हमने सीखा है आज। और इसका जो पार्ट बी है, लाइफ ऑफ पीपल, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस चैप्टर। So we'll see that in the part B. Thank you. Please like, share and subscribe. If any question, do comment me on the channel. Or regarding this chapter, we will discuss in the part B as per the mains and prelims questions. So till then, thank you. Take care.